Hi everyone, I hope all of you are doing well. So today is a Saturday and today I'm going to tell you about a week in my life as an IS officer on the field, and maybe through this video you will also get an idea about a week in life of an IS officer who is working in the field. Of course it can differ for every person because IS postings can be so different, the work can be so different that actually my week might not look like at all like some other IS officer's week. Similarly, it is very different. It can be very different for an IPS officer, for a foreign services officer, for an IRS officer. So this differs from service to service a little bit, but generally there may be a same pattern for field officers. So today on a Saturday, I've started my day quite early, running at around 6:30 in the morning. Today I didn't run, but today I did some walking and then I did some strength exercises, and after that I had my breakfast, etc. And by 10 I was in the office because even on a Saturday today I had to go to the office to clear some files, to clear some basic things that have been pending, especially because during the weekend, during a Saturday Sunday, you get more time to look calmly because there are not any visitors from the public, so you can look at issues more calmly और उसको फिर सॉल्व करने का वीकेंड में टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, आप डिस्कशन ज़्यादा अच्छे कर सकते हो. During the week there is more busy schedule and there are a lot of visitors, there are a lot of people coming to you to resolve various issues. इसलिए I think the weekend time is better for that. So that's why I prefer to solve some of my things during the weekend itself. Apart from that, around 11:30 I headed out for some functions, some inaugurations, and also I went to the field to one of the talukas to inaugurate and to distribute loans that we had coordinated with the Bank of Maharashtra to various self help group beneficiaries. तो क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे फंक्शंस, इनाग्रेशंस, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जिसमें आप बेनिफिशरीज़ को कोई फ़ायदा आपको देना है, उस टाइप के फंक्शंस चाहे गांव में है, चाहे तालुका में है, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में है, दोज आर नॉर्मली हेल्ड ऑन द वीकेंड्स बिकॉज एट दैट टाइम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट. एट दैट टाइम यू कैन इन्वाइट मोर पीपल एंड पीपल आर अवेलेबल टू कम. अदरवाइज दूसरे दिनों में सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं और नॉर्मल काम शुरू होता है, तो वीकेंड पे ज़्यादा अच्छा रहता है. तो इस तरह से नॉर्मली ऑन वीकेंड्स ईदर यू आर इन अ फील्ड टूर और समथिंग, बट मोस्टली द टाइम इज स्पेंट इन कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, बट इट कैन डिफर फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट. तो मेरा सैटरडे पूरा उसी चीज़ में गया जैसे मैंने बताया, और संडे भी कल मेरा इसी चीज़ में बिज़ी रहेगा कि ऐसे कुछ फंक्शंस हैं या फिर ऐसे कुछ शेड्यूल है किसी चीज़ का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई बार संडे फ्री होता है तो उस दिन आप थोड़ा बहुत फाइल देख लेते हैं, एंड देन यू कैन do your hobbies, like I make some videos on Sunday sometimes, or I read. So these kind of hobbies you can pursue on the Sunday if you have some time. But normally, especially if you're in a DM post, you're a district magistrate, you will not have time on Sundays. That is one of the posts where I'm a CO जिला परिषद, so मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है, पर संडे मेरे थोड़े से फ्री होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट डेफिनेटली DM शिप में काफ़ी नहीं फ्री होते क्योंकि आपके पास बहुत काम होता है, पर फिर भी अभी भी कभी कभी संडे फ्री होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो बिज़ी तो ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ रहते ही हैं. उसके बाद बाकी अब मंडे से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो मंडे इज़ रियली बिजी. क्यों, मंडे को क्या होता है, मंडे लॉट ऑफ पीपल कम टू विजिट यू, लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर इन द ऑफिस, you are not on the field, so they will come and visit you and they will have whatever, they will have representations. उनके पास एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उनके पास कोई ऐसा केस हो सकते हैं जिसमें उनको निवारण चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है किसी योजना का, तो वो उसके बारे में बात करने आएंगे आपसे. फिर आपके पास बहुत सारे हियरिंग्स हो सकते हैं, यू होल्ड हियरिंग्स. बट नॉर्मली मंडे को क्या होता है कि सुबह ऑलमोस्ट दोपहर तक 2-3 बजे तक मीटिंग्स ही रहती हैं गवर्नमेंट्स की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की, ताकि हम पूरे वीक में क्या क्या होने वाला है वो क्लियर हो जाए. समटाइम्स ऑन मंडेज द मिनिस्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और जनप्रतिनिधि जिनको बोलते हैं, दे माइट कम टू टेक ए मीटिंग कि डिफरेंट वर्क्स में क्या चल रहा है, सो यू कैन गिव देम एन अपडेट. तो इस तरह से डिपेंड करता है, इट कैन डिपेंड ऑन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, बट यूजुअली मंडेज आर वेरी फुल. आप ऑलमोस्ट रात को 8 बजे तक बैठे रहते हो, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, और ये फाइल वाला काम नहीं होता है, मोस्टली ऐसा काम होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन, रिजल्ट, या सीधा आपको जनता से, पीपल से यू हैव टू इंटरेक्ट. देन ट्यूसडे कम्स एंड ट्यूसडे अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ VCs. तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट टेक्स ए लॉट ऑफ रिव्यू ऑफ द वर्क्स दैट इज गोइंग ऑन. लेट्स से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, तो ट्यूसडे को गवर्नमेंट विल आस्क, दे विल कंडक्ट ए मीटिंग एंड आस्क व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस, वेयर आर यू लैगिंग,
दे विल आस्क रीजंस फॉर इट, और इस तरह से एक पूरी ब्यूरोक्रेसी काम करती है. सिमिलरली मेरा क्या होता है, मैं नॉर्मली अपनी जो विजिट्स होती है, फील्ड विजिट्स, आई गो टू विजिट द फील्ड ऑफिसेज, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, इनके जो ऑफिसेज होते हैं वो नॉर्मली मैं देखने जो जाता हूँ मैं, आई स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे. सो वेडनेसडे इवनिंग, थर्सडे आफ्टरनून, फ्राइडे मॉर्निंग, ऐसे ऑल्टरनेटिवली आई प्लान इट. समटाइम्स आई कीप देम सरप्राइज, समटाइम्स आई हैव ए पर्टिकुलर शेड्यूल जब मैं उनको विजिट करना है. तो इस तरह से ऑलमोस्ट 30% of my time, working days, Monday to Friday, 30 to 40% will go in this kind of field visits where I will go and visit let's say जल जीवन मिशन है, let's say उसमें कुछ काम चल रहा है, उसमें कोई पर्टिकुलर स्कीम में, और में मनरेगा जैसे बोलते हैं जिसमें कोई काम चल रहा है, तो वो दैट यू माइट गो टू विजिट दैट पर्टिकुलर वर्क, यू माइट सी what is the quality of the work that has been created. Of course there are thousands of work, you can't visit everyone, but sometimes you go and visit some of them so that you can suggest improvements, you can see there are any lacunas in those kind of works, and that way, that's how you spend your 30-40% of the time as an officer. Now apart from that, now rest of the time is either spent meeting with people. They will come and visit you, they will present various queries, applications to you. Person can come for pension matters, a person can come for some benefit उसको गवर्नमेंट से नहीं मिला तो उसके बारे में मिल सकता है. ए पर्सन कैन कम विद एन एप्लीकेशन कि उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप सॉल्व करिए. तो इस तरह से आप पे अलग अलग पोर्टफोलियोज़ होते हैं और उससे संबंधित चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं. इसके अलावा वी ट्राई टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ कोर्स, like for example holding some functions where we can have our employees or teams mingle and meet and spend some time, but that really depends. Sometimes क्या होता है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है. For example कोविड रहा है पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से, so we haven't been able to hold any such functions or any such kind of events unfortunately, but those are team building events. पर वो obviously ये नहीं है कि रोज़ होते हैं, महीने में 1-2 बार हो सकते हैं, या कई बार क्रिकेट मैचेस वगैरह भी हम रख लेते हैं. So that might happen maybe in 3 months or 4 months. But that is for team building and that is separate from your normal work routine that you have. Now apart from that, अगर आप वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो उस दिन आपका ऑफिस में भी बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती हैं. एज ए लाइक फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन ए पब्लिक बॉडी, मीनिंग ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी constituted under the 73rd amendment, which is known as District Development Council or the Zilla Parishad. Zilla Parishad में क्या होता है, you have a lot of development work which is mostly steered or which is mostly kind of driven by the body that is elected by the people in the district, but you are an executive officer. I am an executive officer who is in charge of the administration. So they do the planning, they do all the kind of planning, and you have to make sure that gets done. So in such positions there is a lot of public interaction, there is a lot of public representatives constantly meeting with you, and you have to also carry out a lot of meetings with them. So those are very hectic and very intense. So in the IS and IPS, I would say especially, you will have a lot of public interaction from the first day itself, because you are a field officer and you have to get the work done on the field, and that is the beauty of this particular position that you have. So I hope I am able to give you some kind of a reflection of my days. Apart from work, I normally wake up 6:30 to 7, maybe sometimes at 6. I try to wake up at 6, but 6:30 तक मैं बाहर जाता हूँ. I run. Lately I have been running again because पहले मैं भागता था 2017-18 में, उसके बाद I started doing weight exercises and now I've started running again. And apart from that, I make some videos, so that takes some of my time. And apart from that, I also have a hobby where I read, I play, I do some sports. So that's what my life looks like apart from work, and I hope that gives you some idea about what your life might look like. बताना इतना क्या कहते हैं, बताने में आप बस बता सकते हो, but living it is much more exciting because there is a lot happening on a daily basis. The kind of issues that I am handling are very, very different in nature. Sometimes you have to issues things that have to do a little bit with law and order. Sometimes you have to handle things that have to do with some schemes. Sometimes you have to handle things you have to do with planning and imagining and kind of thinking about what big things you can do in the district, something interesting, something new. So ऐसे करके बहुत से अलग अलग चीज़ें डिस्ट्रिक्ट में चलता रहता है, हम करते रहते हैं.
and it's an exciting life. I hope you get some idea, and if you have any questions, let me know in the comments. Let me know if what you think civil servants do on the field, and that will give me a good idea about what you might be thinking and what your perceptions are. Thanks a lot. Have a good day. Bye.